Hello everyone. Now we study lecture 8 of electronics. In last lecture 7 you study intensity of electric field due to solid sphere out of surface. In last formula ड्राइव हुआ आपका जो है वॉल्यूम डेंसिटी की फॉर्म में वो था E इक्वल आर क्यू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब इसकी आगे कंडीशन आप देखेंगे। सेकंड कंडीशन ऑन द स्फीयर या ऑन द सरफेस पे आप इंटेंसिटी यहाँ फाइंड कर रहे हैं तो इक्वल हो जाएगा आपका सरफेस के लिए आप देखें स्मॉल आर की वैल्यू होगी कैपिटल आर के इक्वल। और इस फॉर्मूले में आपने जो डेरिवेशन प्रूव किया दोनों फॉर्मूलों में उनमें प्रूव किया है 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर देयरफॉर इक्वल 1/4 क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। एंड दिस कंडीशन shows इक्वल आर क्यू रो 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर which is rho r upon 3 epsilon naught. Such a condition. And third condition is shows that inside the sphere to finding intensity inside the sphere we assume a solid sphere of radius capital R. It contains a unknown point from center R inside the sphere. A short segment dA vector, intensity of electric field E vector becomes to be parallel to each other. Then we apply a Gaussian surface to find intensity of electric field, and as you see that large radius form large sphere and small radius for small sphere, as well as large sphere contains large charge and small sphere contains small charge. Let total given charge Q contain Q dash on the small sphere, which is required intensity E dash, and flux becomes to be phi dash. D phi dash equal E dash dA vector, D phi dash equal E dash dA cos 0. After integrate, we can say total electric flux E dash 4 pi of R square. According to Gauss theorem, we can say phi equal to Q upon epsilon naught E dash 4 pi of R square. E dash becomes to be 1/4 pi epsilon naught Q upon R square. It is. And after applying the value of Q dash in the form of charge Q, we use volume charge density in this case, which is small charge upon small volume and large charge upon large volume. 4/3 pi cancel. Q dash R Q Q upon capital R Q. By equation first, E dash equal 1/4 pi epsilon naught R Q
Q upon capital R cube upon R square. After cancel R square, it is E dash equal 1 upon 4 pi epsilon naught Q R upon R cube. It is required value of intensity of electric field inside the spherical surface. Now we find intensity of electric field inside the surface in the form of volume charge density. Volume charge density is rho equal Q upon 4 by 3 pi r cube. R is the radius of large sphere, therefore Q becomes to be 4 by 3 pi r cube rho. It shows that E dash equal 1 upon 4 pi epsilon naught 4 by 3 pi r cube rho r upon capital R cube. R cube से R cube cancel, 4 by 3 4 pi से 4 pi cancel, it gives rho r upon 3 epsilon naught. It is intensity of electric field inside the solid surface. Such a condition we can easily say electrostatics. Material में आपका जो आपका टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये आपका फिनिश रहा। अब यहाँ बढ़ते हैं आप कैपेसिटी की। देखिए नाउ कैपेसिटी न्यू टॉपिक, जो आपकी बुक का लेसन आपका 4th लेसन होगा। 4th लेसन से पहले आपको थर्ड लेसन में पोटेंशियल पढ़ाते हैं। देखिए सबसे पहले पढ़े आप थर्ड लेसन, थर्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने क्लास 10th में भी स्टडी किया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टूडेंट्स क्या था जी, जब किसी चार्ज को इनफाइनाइट से मीडियम में किसी पॉइंट तक लाते हैं तो जो वर्क करना पड़ता है और चार्ज का जो रेशियो होता है इसे कहते हैं आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस टाइप से आप समझ सकते हैं। इनफाइनाइट से किसी चार्ज को क्यू नॉट चार्ज को, जो आपका क्यू नॉट जे का है टेस्ट चार्ज है, इसे आप मीडियम में लाएं तो जो वर्क करना पड़ेगा जैसे V इक्वल फॉर्मूला हो जाएगा W अपॉन Q नॉट। इट मींस रेशियो वर्क डन ड्यू टू रिप्लेस यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू मीडियम, इट्स बिकम्स टू बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन दिस पॉइंट एंड यूनिट जूल पर कूलम एंड क्वांटिटी scalar. It is also SI unit has volt. It is SI unit. SI unit of electric potential and dimension. Work dimension mL2t-2 and charge 80. It gives mL2 t-3 a minus. It is electric potential, and here definition of 1 volt. What is 1 volt? Important definition. 1 volt is defined as if work done is used to replace unit charge from infinite to medium is 1 joule, then potential becomes to be 1 volt.
it is the required definition of 1 volt. And now we study 1 volt energy. 1 volt energy shows important definition of 1 electron volt. 1 electron volt. 1 electron volt is such of energy which used to accelerated a unit charge with accelerated an electrons with 1 volt potential called 1 electrovolt energy. Again, 1 electrovolt is the energy which used to accelerate an electron with 1 volt. It is V equal W upon Q naught. W here energy, V, and it is capital E, and it is electron. Therefore, this becomes to be equal to EV. It called 1 electrovolt of energy. Now we study electric potential difference. It is electric potential difference. As you see, electric potential work done due to replace unit charge from finite to medium. Now we study electric potential difference. 2 points have potential VA and VB for A and B point. Then test charge Q naught used to replace, and work done becomes to be W. Then potential difference will be W upon Q. It is also represented with VA minus VB. But it always reminds that charge always transfer high potential to low potential. Here VB is greater than VA. It is required condition. Otherwise, charge transfer from A to B. Then we can say VA minus VB. आज के लिए इतना ही. Thank you.